Assalamu alaikum. My name is Naila Ansari, and I'm here to discuss, not exactly discuss, I think to have a live interactive session with you and trying to offer you a little learning. Of course, we cannot learn everything in 2 hours, but maybe these 2 hours could be time and space for you to learn a little about your own selves. And my topic name, the topic that I will be doing is basically it's a road on the road to self-discovery. And being part of this program, I thought that you must be doing so many case studies and lectures and videos and all of that. I thought it was more important for me to connect with you face to face, interactively, and give you some fun. You know, it's a much more relaxed and a fun-filled kind of a session compared to a very academic one. And in my view, I think, and I've done this many times at the entrepreneurship programs organized by Dr. Shahid Qureshi. So I've done it with many students also. So in my view, I don't know if how you think about it, but starting any business or getting into any leadership role or taking charge of any job or role, I think it's so important for us to get original about ourselves, to get to know first who we are. And only when we know who we are able to regulate ourselves well and then help others. So if you want to become, if you want to start anything, if you want to lead anything, if you want to work in a team as a leader, it's very important for us to be self-aware of who we are and what are our strengths and what is it that we need to learn, so that once we are sure about our own selves, probably that's when you start supervising others, mentoring others, helping others. It's not really possible and maybe not very practical and original if we are not aware of who we are. And of course, there's a mix of people over here. So some of you must be very experienced and you are already, into different professions or into different businesses or ventures. And some of you are still thinking about it. And some of you are young and some of you are, are growing in your life. So there's a mix. But still, at any point in life, I think we all have a chance to improve ourselves, to cleanse ourselves, to reflect upon ourselves and see where we are and what else can we do to become a better person, or at least to become a better expert. So what do you think about this take? Do you think you all agree that it's important to be self-aware? Anybody likes to talk about it before we start our exercise? People can respond in chat box. People will respond in chat box. Yes, you can respond in chat box, or you can just raise your hand and I can see you and you can talk. You can, raise your hand and I can just ask somebody to speak up, because otherwise everybody will start speaking. So if you just raise your hand, there is a on the task bar, you can see, you can raise your hand. Anybody like to say anything? People start responding in chat box. People are responding in chat box. Acha, okay. Yes, agree. Abdul Rahman Saab says, yes, I agree. Filza says, yes. Yeah, I just get 2 answers to my question. Okay, chat box is also fine. G, anybody? So if you all agree, shall we begin? Okay, all right. सब लोग बहुत खामोश है या you are just expecting that I should start the program, I should start the session? Anyways, okay, so I'll begin with my slides. Can you see the screen, students? Abdullah, yes. can you see the screen? All right, yes, great. Okay, so let's begin with the first exercise. Now, dear students, I want all of you to be active and take part in this exercise. Otherwise, there's no point, because we are not studying, doing a lecture
or we are not doing a video or anything. So I want you all to participate in this. So this exercise is about, you have to imagine or think of an animal that you like. I'll give you 5 minutes for that. And then once you think about the animal, then you will have to write, describe that animal in terms of its features, qualities, habits, and just take a piece of paper, or if you have your laptops on your Word format, just write a few characteristics about this animal. And then once you finish, then just let me know that you're all finished, and then we'll start the exercise. So are you ready to do this? Yes, students, can you start, please? Just think of any animal that you like. It could be bird or it could be anybody. And then start thinking about its qualities, its habits, its features, and just put it on a piece of paper and, 1, 2, 3, 4, karke, you can make a list. Can you start, please? I'll give you 5 minutes to do this. Ahmed Zahir Saab, are you writing? Are you doing this exercise? Yes, people are doing, they are responding in chat box. Okay, great. This is a very fun-filled exercise. I really want you to participate. Acha, okay. Raised hand. Okay. Gee, anybody likes to ask me anything? I don't know who's raising the hand. Ji, Amir Saab, you're asking something? Amir Saab, you have a question? And Hussein Ara, you also have a question? Done. Okay, Mohammed Hassan Saab is done. Mashallah, very good. बहुत सारे लोगों ने कर दिया. I'm glad. आमिर प्लीज अनम्यूट. आमिर मैंने अनम्यूट कर दिया. अनम्यूट ही हुई हूँ जी. आमिर अनम्यूट कर दिया मैंने, आपको बोले आप जी. Thank you so much. Actually, this is Amir from Multan. Actually, I don't have question. I'm just sharing that I have done with that exercise. What you are asking. Okay. So that is the reason I raised my hand. Okay. Thank you so much. Hussein Ara, you have a question? Okay, great. So अभी भी आपके पास 2-3 मिनट है. All of you can do that. You just have to imagine an animal and just write its qualities, features, whatever comes to your mind. Make a list, and then once you are done, please don't change it. And then we will start the exercise. If you will change it, you will be dishonest to your exercise and to your self-discovery process. So once you finish writing the characteristics, qualities about the animal, then you will not go back to the page and erase it or make a change. Don't do that. It's just a fun-filled exercise. It's just for your own discovery. So कोई test नहीं हो रहा, कोई grading नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. So I would want you to stay honest with your whatever you've written on the paper. उज़ैर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलें. उज़ैर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. बोलिए. मैम एक दफा फिर वो स्लाइड शेयर कर दें, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने देखा नहीं है. मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ. आपको एक एनिमल इमेजिन करना है और बस. That's all that you have to do. Okay, ma'am. You think of an animal, you write its features on a piece of paper or on a laptop, और जब खत्म कर लें तो उसको चेंज मत करें, और फिर जब रेडी हो जाए तो फिर हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. That's it. डॉक्टर जमील साहब, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया. को बात करना चाह रहे हैं तो कर लें आप. जी बोलिए. Thank you, जी. I have done it.
तो अगर वो शेयर करने की बारी आई तो जी जरूर जरूर। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वॉलंटियरिंग। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और बस मैं आपको 1 मिनट और है आपके पास स्टूडेंट्स, 1 मिनट है सिर्फ। यू हैव 1 more minute left and then you are done. अब हमको ये देखना है कि how much you are all interested. So if everybody wants to share, then हम इसी के ऊपर अपना पूरा सेशन कर लेंगे। अगर and if you think that some of you, if I'll check, I mean अभी देखते हैं, पता चलेगा how many of you are ready to volunteer. अगर 10 लोग हैं तो फिर हम we'll go to the next exercise. After having 10 volunteers, then we'll move on to the next one. और अगर सब करना चाहेंगे तो then we'll stick to the same exercise. So I have another plan for you also after this exercise. Okay, it's 4:20, so just be honest to yourselves. Or I think we are all adults and we trust each other and we respect each other, and that's the way to bond in a classroom. That's the way to behave and interact in a classroom. So whoever is going to present, I will tell them how to do it. So you will have to respect and accept how the person presents. You are at your liberty to present it in English or in Urdu. There is no problem with language. जिसमें comfortable है वो उसी language में उसको present कर सकता है. Okay, so guys, are you all done with the description of the animals? Just say yes. अगर yes कह सकते हैं या whatever. अगर आप लोगों की शक्लें नजर आ जाएंगी तो आप लोग हाँ wave करते तो मुझे पता चल जाएगा. Dr. Nella, almost everyone is done. They have responded in chat box. That's great. You can all wave and let me know that yes, you are done. Okay. All right. Great. Okay. Captain साहब ने भी कर लिया है. Very good. Excellent. राबिया ने भी कर लिया है. And okay, lots of you. अच्छा. Okay. अब क्या करना है? So this is a game of honesty. अब आपको next, अब मैं बता रही हूँ next क्या करना है. Okay. अब आप क्या करेंगे? You have written down the qualities and strengths of the animal that you like. Yes, we are all done with that. आप क्या करेंगे? Without making any change. Without making any change. चाहे उसकी बुराई की है, चाहे उसकी अच्छाई की है. We don't care about that. Now let's say Dr. Jamil से हम कहते हैं सबसे पहले present करेंगे. अब वो कैसे करेंगे present? इस तरह करेंगे Dr. Jamil. That now you are going to imagine that you are the animal yourself. Okay, Dr. Jamil, you are the animal yourself now. So now let's say अगर आपने lion किया है या horse किया है या जो भी किया है, now you are the animal, and now you're going to introduce yourself to everybody with your strengths and your qualities and your weaknesses, both. You see, when we make a presentation about ourselves, we just don't have to do the good things. We will also do the weakness part. We will also say कि ये, you know, मगर मैं ऐसे भी करता हूँ, मैं ऐसे भी करता हूँ, मैं ऐसे भी करती हूँ. So now, let's say I'll just give you a small example. So suppose if Dr. Jamil is saying I'm a horse, then he is going to actually talk like a horse. Okay, I'm the horse and I have this and I do this and I do that. And also when I'm angry, I do that. I don't like this. I go along with this. I don't go along with that. और ये आप change नहीं कर सकते. आप जो लिख दिया है उसी के ऊपर आपको अपनी qualities को present करना है. तो मैं आपको 1 minute और दे रही हूँ to go back to your work, and now you're imagining that you are the animal yourself, and now you're going to present it to the class. मैं यूं हूँ, मैं strong हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बहुत तेज भागता हूँ, मैं इस बात पे नाराज हो जाता हूँ. All of that, looking at the qualities that you've already described on the piece of paper. Is that okay? So now don't change it, please. You don't have to change it. Just imagine that you are the animal yourself and you're going to talk with the word I. I am this, I do that. कोई भी ये नहीं कहेगा कि lion ऐसे करता है या horse ऐसे करता है. आप खुद lion है, आप खुद horse है, आप खुद cow हैं, आप खुद goat हैं, whatever you are. Is that okay? Okay. ये So let's. So I'll give you. जी बोलिए. फिर
फिर उसके बाद एक चरण साहब है मीरपुर से, वो कर देंगे। उसके बाद फिल्ता साहिबा मुल्तान से वॉलंटियर किया हुआ उन्होंने, फिर असमार कराची से। तो ये हम इन चारों को तरतीब बता देते हैं ताकि वो नेक्स्ट तैयार हो जाए। जबरदस्त। हाँ, तो अब्दुल्ला हम जो है ना 8-10 का कर सकते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर और भी कोई 3-4 लोग और करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। और ये हर आदमी जो भी प्रेजेंट करेगा 2-3 मिनट से ज्यादा ना करे, 3 मिनट बस अपने आप को इमेजिन करे कि वो ये खुद एनिमल है और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमको एड्रेस करेगा, बताएगा। डॉक्टर जमील मैंने आपको स्टार्ट कर। और आप अगर चाहें तो 1 मिनट ले सकते हैं टू गो बैक टू योर टेक्स्ट एंड सी हाउ यू विल कन्वर्ट इट टू टेक्स्ट बाय इन द शेप ऑफ एज इफ यू आर द एनिमल। अगर उसको जरा सा चेंज करना है, आई में लेके आना है, तो आप 1 मिनट ले लीजिए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आप एनिमल की तरह बात करेंगे। Should I start now? Yes, Dr. Jamil, please. Thank you very much. It's a very interesting type of exercise. और luckily जो है वो मैं चीता बना हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ओके जी, चीते साहब आप क्या करते हैं? मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि आई एम वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अमेजिंग। मेरी स्पीड जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, और मैं विदिन 6-7 सेकंड्स जो है वो मैक्सिमम स्पीड पे स्टार्ट के बाद पहुंच जाता हूँ। मेरे जिस्म में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो मुझे हेल्प आउट करती है। मेरी दुम जो है वो मुझे गाइड करती है आगे बढ़ने में। मेरे जो जॉज हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो पुश करते हैं और उससे मैं स्पीड में इजाफा कर सकता हूँ। मेरा ये है कि मैं मशहूर हूँ और जाना जाता हूँ प्लानिंग, विजन और फोकस टारगेट के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ मुझ में कुछ बड़ी कमज़ोरियाँ ऐसी हैं कि जिसकी बिना पे बाज़ दफ़ा मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आई नो दैट। मेरी एक वीकनेस ये है कि मैं एक ही रन में मैक्सिमम स्पीड के साथ सिर्फ 90 सेकंड्स तक दौड़ सकता हूँ, और अगर उसी स्पीड के साथ में उससे ज़्यादा दौड़ जाऊँ तो कोलैप्स भी कर सकता हूँ। और जब मैं टारगेट को सेट करता हूँ तो अगर डिट्रैक्शन आए, यूजुअली मैं उनको केयर नहीं करता। रास्ते में अगर डिट्रैक्शन आ जाए आई रिमेन फोकस्ड। लेकिन अगर मेरा जो टारगेट है हिरन है फॉर एग्जांपल, और वो जिगजैग मूव करती है, तो उसकी वजह से जो है मेरी स्पीड कम हो जाती है और मैं जो है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। इन स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ जो मेरी जो पॉजिटिव चीज़ है वो मेरी प्लानिंग, फोकस्ड विजन और स्पीड और लॉन्ग थिंकिंग, उसकी बेस पे ऑलमोस्ट 100% आई हैव सक्सेस रेट। वेरी रेयर कि मैं जो प्लान करूं, जो टारगेट करूं, जिसको फोकस करूं, उसको पा ना लूं। और अदर साइड ऑफ द वो ये है कि अगर कभी ऐसा हो जाए, जो बहुत रेयर होता है, तो फिर मैं उस दिन या फिर दोबारा शिकार नहीं करता। और वो स्टफ इट के समटाइम जो मुझे शौक इतना होता है कि जितनी मैंने प्लानिंग की हुई होती है और वो सारी चीज़ें, तो मैं मर भी जाता हूँ बाद में। दैट इज ऑल अबाउट मी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील, इट वाज लवली। और अब आप वापस जाके सोचिएगा कि आपने हमें क्या बताया अपने बारे में। बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली, और वी गॉट टू नो सो मच अबाउट यू थ्रू दिस मेटाफोर। थैंक यू सो मच। ओके, हु गोज नेक्स्ट? Charan from ओके चरण, और देन विल कैप्टन साहब को जरूर आपने करवाना है, कैप्टन जहीर साहब को। जी। उसके बाद ओके जी हु गोज नेक्स्ट? हेलो चरण जी। हेलो, आई एम एलिफेंट एंड चरण, आई वांट टू सी यू। आपका वीडियो ऑन नहीं है। ओके, हियर आई एम। ओके चरण, सो यू आर द एलिफेंट। वाओ। Yeah.
Yeah, I'm elephant, and I think I have a quite good memory, and I think myself that I'm cute, and You are I'm not an cute. aggressive anyway. And I'm You're not an not aggressive aggressive. animal. Wow. And Zabardast. actually, I'm one of the calm species, and I got a trunk. I like my own company, and Wow. Zabardast. Zabardast. but I think my weakness is that I have some rare body parts like my teeth, for which I get sometime killed. So I think that's a weakness. And Okay. that's it. Not a big thing. And you walk in a clan always, Hannah? Yeah, You more. Yeah, always walk in mostly. a clan. Charan, that was wonderful. Just imagine how what you told us about yourself. Yeah. Lovely, lovely, and you are cute. You are very cute. Thank you. Thank you, Charan. Thank you very much. Okay, Ji, Abdullah, who goes next? Filza from Multan. Okay, Filza. Horse. Sorry, you're a horse? Yes, I'm a horse. Zabardast. I didn't know I would have to, say that I'm a horse, or I would have said an elephant. I am You are a horse. strong. I'm strong. I'm sturdy. I can run. I feel royal because not everybody can afford me. Wow, amazing. And I'm very loyal to my owner. I'm loyal to my work, and I survive that situation. I can switch roles. Like sometimes I have to sometimes I have to write. Some good between switching roles. की आवाज खराब हो गई है. But the only thing that I don't like is that आप अपनी वीडियो बंद कर दें चाहे. फिल्जा, आप अपना वीडियो बंद करिए क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी. फिल्जा को चैट में बता दें ये. Knowingly I get. Can you hear me? Can you hear me now? Yes, I can. ठीक है. मैंने वीडियो फिल्जा, आपने बहुत सारा मिस कर दिया आपका जो आपने बोला था. So I'm the only thing that I don't like to my owner. Yes. I think we lost Filza. All right, Abdullah, can we continue with the next person, please? Yes, Asmar from Karachi. Okay. Asmar. Hello. Hello. Yes, ma'am. Can you hear me? Who are you? So who are you? Yes, ma'am. I'm an elephant. Okay. Yes, I'm an elephant. I'm huge. I'm enormous in size. I can do various things that most of animals cannot. I can reach on the top of the trees, and I can even eat leaves from there, which most of the animals cannot reach because of my characteristics, because of the traits of my personality and my physique. And besides, I think that I have got a very innocent and a cute face. Yes, you do. Yeah. And then, thank you so much. And then, yes, apart from the strength and everything, I think that we learn from our experience, because since we love to move around in herds, and the person who is the eldest one among the herd, that person is the one who's the leader, and we love to listen to that person, to that senior elephant of the herd, because he can guide us properly and he can actually show us the way. And collectively we nurture our children. We want to be together, and if we see there is any danger, we put our kids in the circle and we stand around them and we make a boundary so that they are not hurt by dangerous animals. Yes, so they are not hurt by
any danger, or they're not hurt by any other dangerous animals. So this is how we protect our kids. So we are very nurturing, loving, we are very calm and peaceful. We love to stay in a herd, so that we can benefit one another, and we can also learn from one another's experiences. So I think that and the one of the most important part is that as elephant, I have a very sharp memory, and there is always a saying which people say that elephants never forget. So if something happens, so I remember those things. Zabardast, you are a family animal. Zabardast. Yes. Excellent. Thank you so much, Mohammed. Thank you so much. Okay, who goes next? Uzair from Quetta. जी उज़ैर. From all right, उज़ैर. अच्छा उज़ैर, अगर आवाज सही नहीं, वो अगर इंटरनेट कनेक्शन खराब है तो आप वीडियो बंद कर दीजिएगा. नहीं मैम सही है. आवाज आ रही है मैम? आ रही है. मैम I am a horse. I am a social animal and I am friendly. I love to make a lot of friends, and I am romantic. Most of the males horses are romantic and talented in leadership, and I give proper response to the people, and I have friends. My characteristic is that horses can sleep both lay down and in standing position also. And I have 200. It's not horses, it's you. Yeah, sorry. And I have 205 bones. My behavior is that I am a more active animals. Very good. Zabardast. Thank you for letting us know about you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Who goes next? Abdullah, who goes next? Oh, sorry, I was mute. I was speaking. Abdul Rafi. Abdul Rafi. Ji, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I am a parrot, and I have a wonderful voice, and I love to imitate the interesting voices I hear. I am green in color, and I have a very strong red beak, which I use to chow down my food and crack hard nuts. I love chilies, and they are my favorite food. I live in a cage. I get food 3 times a day, and children bring me a wonderful, yummy dishes after every hour. But despite living a luxurious life, I live in a cage, and I feel sad that other birds are free and I'm not. Thank you. Because you are so beautiful, that's why people want to keep you in a cage. Yes, exactly. They are threatened by your beauty. Not threatened, but they like me so much that they cannot see me free. That's right. They want to control you. Thank you so much, Abdul Rahman. Thank you very much. So who goes next? Binish from Karachi. बीनेश, हाँ एक दफा तो शक्ल दिखा दिया करें आप लोग, फिर उसके बाद वीडियो बंद कर दें बेशक. बीनेश. हेलो. जी बीनेश. हेलो. जी आपको आवाज आ रही है मेरी? Can you see me and hear me? Yeah, I can. Okay, so I write about the German Shepherd dog because I also have that dog. So you just say I'm the German Shepherd. Okay. Yes. So it's that it's known for its courage, loyalty, and guarding. Binesh, it's not the dog. Okay, it's you. Okay, I am. So I'm a courage, loyal. I have like courage, loyalty, and guardian, and I'm a family oriented also. And I am a possessive person too, like a German Shepherd, and I'm confident, active, and intelligent. And I can protect my friends also. If someone cross line too many times, then everything goes change. And I have a big heart, and I always make sure to put the people I care about first. So I'm a strong than anyone knows, but although I hide it. And you are a beautiful dog. You're a beautiful dog. Thank you so much. I hide it. I have some, I have some like sweet and sensitive sides,
sometimes I divide my attention between too many things like a dog, and I have also finds a way to get things done. I'm an excellent leader too. So which I have provided. Dinesh, zabardast metaphoric explanation. Lovely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Who goes next? Zara. Okay, Zara. Hello, Zara. Hello. So who are we meeting? Which animal are we meeting here? Can you hear me? Yes, we can. We can. So okay, who is this? I'm a hoopoe bird. Oh, Hoopoe. You know the hoopoe bird? You seen that? No, we haven't. Can you explain? Okay, well, yes, yeah, sure. I have a crown on my head, and my feather. Yes, and my coat of feathers is brown, and they've got lovely white and black stripes on the wings. So, and I love sunbathing, and sometimes I spread my wings to absorb maximum heat from the sun. And the best thing that I like about being a bird is that I have the freedom to soar across the sky without being bound by borders. Wow, amazing. Another thing that you might know about the hoopoe bird, about my ancestors, about my ancestors, is that in fact they were mentioned in the Quran. They are also considered sacred in ancient Egypt. On the other hand, in Scandinavian history, we're considered signs of an oncoming war. So that's all from amazing. Thank you, hoopoe bird. Thank you very much. Lovely, lovely. J. Abdullah, who goes next? हम रिक्वेस्ट कर देते हैं अहमद ज़हीर साहब अगर चाहें तो. जी सर, बिल्कुल. Assalamualaikum everybody. I am a camel. And wow. Can you hear me? See, yes, we can. Yes, we can. I'm very robust. I am able to sustain myself despite all problems. I have a very large, very long lifespan, as much as 40 years minimum lifespan. I'm harmless. My people who have me like me for multiple reasons. Among them, I am a means of transportation. I am a means of meat. I provide milk, which is very nourishing. I am a very stable animal. My feet and my paws are specially made for stability. Wow, amazing. I can mount more than one person on my back and continue walking for hours despite the weather. I have multiple eyelids which are able to provide me vision when in the burst of the dust storms. So these are some of my qualities, and I think I have a mention of myself in our holy book, and that's the Quran. And many a times in the Quran it is mentioned that the possession of me is considered to be a great asset for the leaders and everybody else, and I have great value. That's all I can say. Wow, amazing, amazing, Captain Saab, amazing description. Thank you so much for sharing your information. बहुत really lovely. Thank you. बहुत शुक्रिया. Dr. Naila, should we continue this exercise or? जैसे आप लोग कहें, we can move on to the next one if people are not interested. अगर किसी और का नहीं आया तो we can go to the next one. नहीं आगे एक दो है हमारे पास. एक दो और कर ले. हाँ, एक दो और कर ले, then we will move on to the next exercise. वो भी बहुत मज़ा है, वो भी बहुत मजे की एक्सरसाइज है. So अभी कौन बोल रहा है? Sorry. Rabia Sheikh. Okay. Okay, who are we meeting? Hello, this is Rabia Sheikh again. I'm a lioness and I'm very bossy. Okay.
my husband is a lion. He's a king of a jungle, and he's a very lazy person, lazy animal. And I do all the asserting, and all authorities are on me. And I got a very promising eyes, and I'm I'm like blonde to reddish. I do all the hunting. My kids are laughing on me. The way I'm talking, My they're husband laughing. eats and I do all the hunting, right? And I'm an incredible fighter. Yes. I fight for my right. And I fight from the jungle king also, lion. Excellent, excellent. Thank you, Linus. Really, it was pleasure knowing you. Thank you, thank you. Okay, Abdullah. और कोई कह रहा है वरना we move to the next one. Next and last one, Amber. Okay, okay. बहुत मजा आया सबके सुन के, बहुत मजा आया मुझे. Really enjoyed. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Who's this? This is Amir from Multan. Okay, Amir, अपनी शक्ल दिखाएं थोड़ी एक दफा तो अपना can we see you? Okay, okay, ma'am. Maybe my video is shown now. अच्छा कोई बात नहीं, it's okay. Please go on. Ma'am, I think there is a technical issue while video is not going to. कोई बात नहीं, आप just go on. Who are you? Which animal are you? Okay, actually, I have a very strong feeder and very sharp eyesight. I have very strong Who are you? feeder. Which animal are you? Sorry, Amir. I'm not animal. This time I have chosen a bird, eagle. So you are a bird. Yeah, eagle. Eagle. Okay. अब बताइए हाँ. Okay, so eagle, yes. I have a strong feeder and strong eyesight. I have power to fly above the clouds, and I can escape the rain. And the most powerful thing what I can share, after 40 years, I got my new life. I broken my all the wings, and I broke my beak. And after going through this pain, I got new feeder, new beak, and then I got survive in rainy season and cloudy weather. But the thing is, I never miss my aim, and I got whatever I want. And the negative thing is I am merciless. While I see what I want, I got that. Zabardast. Excellent. Whatever fish or even in animals, I'll deer, whatever I want to get that, I do. Wow. So this is all about me. Zabardast. So thank you so much for giving me a Zabardast, Eagle Saab. Zabardast. Excellent. Doctor, एक इरफान साहब ने सरगोदा से काफी इंसिस्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक. बिल्कुल. ओके जी, कौन से एनिमल से मुलाकात हो रही है? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Well, this if I have to introduce me as an animal, I'm a horse. I'm a horse. I'm quick. I'm fast. I'm a beautiful animal. I'm used for multiple purposes. I can survive multiple terrains. Be it deserts, rivers, or it's grain fields. I can survive any area. Wow. I love to. I can live alone. Be at myself. I can live in herds. If there is someone to whom, if I am associated, like if there is an owner of me, I will be loyal. I can be used for multiple purposes, for transportation and for carrying loads as well. But I find it more satisfying when I'm not burdened, because in that way I don't have to compromise my my speed. I'm at liberty. So these are the few things that I
जबरदस्त. Thank you so much. Thank you so much. बहुत मजा आया. Thank you so much. Okay जी. अच्छा, अब्दुल्ला. So the ones who presented, thank you so much, and of course everybody must have written. अगर आप present नहीं कर रहे, हम लोग सब different, different personalities और moods के साथ होते हैं. कोई जरा ज्यादा extrovert होता है, कोई थोड़ा hesitant होता है, किसी के कोई contextual issues होते हैं, and of course we all respect that. So I believe and I hope कि आप सब लोगों ने ये exercise की होगी. और इस exercise का what was the objective? You see, if I had asked you something like this, all right, Dr. Jamil, can you introduce yourself, please? Binish, can you introduce yourself, please? Abdul Rahman, can you introduce yourself, please? Adnan, can you introduce? तो आप लोग क्या बताते मुझे? आप कहते मेरा नाम अदनान है, मैं फलानी जगह पे काम करता हूँ, मैं इधर रहता हूँ, मैंने ये पढ़ा है, यही बताते ना? So at times when we really want to know somebody, then probably metaphors are one of the best ways to introduce one's own self and in fact get to know oneself. आपने notice किया कि मैंने आपको जब ये metaphor दिया of animal, you could exactly introduce yourself in a very deep way. You actually let me know who you are by your nature, by your personality, by your mood, by your strengths, by your weaknesses. Because what happened was, I did not have to ask you, Captain Saab, आप बताइए जरा अपने बारे में. You would have given very superficial information to me. But sometimes through metaphors, एक तो हम अपने आप को भी, we are able to get awareness about our own selves, and at the same time, दूसरे लोगों को भी हम बता सकते हैं हम actually कौन लोग हैं. And probably this is how we bond with each other. अगर कोई classroom है या है कोई team building exercise है, वहाँ पे हमें एक दूसरे की strengths और weaknesses पता करनी है. तो अगर हम इस metaphoric exercise का इस्तेमाल करें, तो हमारे group में 5 मिनट के अंदर लोग हमको पहचान. लेकिन metaphor that we just think much, and we can just do it in a very subtle manner, and we get to know about oneself a bit more deep. कौन था इरफान और कौन था नकीब. लेकिन शायद मुझे ये याद रह जाए कि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं जो हूं ना आपके लिए एसेट हूं, जैसे कैप्टन साहब ने कहा मैं जो हूं ना आई एम एन एसेट फॉर यू, जो हूं ना ग्रीन कलर का हूं मगर खूबसूरत हूं मगर मैं केज में रहता हूं. तो शायद about this person with this strength, लेकिन नामों से हम लोग याद नहीं रख पाते. So at times when we do this metaphoric exercise, we actually start getting to know each other and we are able to recall each other's strengths and weaknesses. And अगर team building में हम काम कर रहे हो, कोई team project हो, so I think this is one of the best ways to introduce each other so that we get to know किसकी क्या strength है और हम किस तरह इस group goal को achieve कर सकते. So that was the idea of doing this exercise. I hope I made some sense. Okay, all right, great. Thank you. Okay, now we move on to the next one. ठीक है, अब मैं आपको फिर लेके चलती हूँ अपनी स्लाइड पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस पे जा रहे हैं. Okay, now this is another funny exercise. और इसमें जितना ह्यूमर आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें. Use your sense of humor as much as you want, because again it's a fun exercise. करना क्या है कि पहले तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. We'll do a breathing exercise और उसके बाद you have to just relax with your body, with yourself, with your mind. Take a very, very comfortable position wherever you are sitting, and then जो मेरा दूंगी सोचने के लिए और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि tell me if you're given an opportunity to change any one thing about yourself, what would that be and why?
You can be as funny as possible. So somebody can say, मुझे जो है ना अपनी नाक बदलनी है, मेरी नाक मोटी है, मैं चाहता हूँ ये पतली हो जाए. कोई कह सकता है कि मेरा कद छोटा है, शायद मुझे I wish मैं अपना कद बड़ा कर सकता. कोई कह सकता है कि मैं अपने टाइम मैनेजमेंट को शायद चेंज कर. It could be about your habits. It could be about your skills. Anything. अगर मैं आपको एक opportunity दूं कि आप अपनी एक चीज कोई change कर लें, तो वो क्या होगी और वो क्यों होगी? So I'll give you 5 minutes to think about it, and then you can volunteer to present. Please start the exercise. पहले आप लोग सोच लें, उसके बाद फिर हम breathing exercise करके, and then we'll move on. Has to be one skill, one habit, or any one personality trait. Anyone, and you cannot talk about 3. I will stick with one. अभी जरा सारे लोग कर ले. हम exactly 2 मिनट के बाद start करेंगे at 5 p.m. You still have 2 minutes to think about it. Okay? Thank you, Irfan, for volunteering. आप सबसे पहले आप present कीजिए. बेहतर ये है कि जिन लोगों ने पहले प्रेजेंट नहीं किया वो प्रेजेंट करें तो ज्यादा तो बहुत अच्छा है. ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने पहले प्रेजेंट नहीं किया वो अब करें. ये तो अच्छी बात हो जाएगी ताकि सबकी पार्टिसिपेशन हो जाए. करेक्ट. आई एग्री. कहाँ जा रहे हो? मोहम्मद असमार, मोहम्मद ये रेडी हैं. बीनिश भी रेडी है शायद, और सोहेल. ओके अब्दुल्ला, आई थिंक ये आप रेगुलेट कर लो कि जिन्होंने पहले प्रेजेंट नहीं किया अगर उनको चांस दे दें. जी. अनम फैज कराची से हैं, इन्होंने पहले नहीं प्रेजेंट किया था, ये कर लेंगे. उसके बाद नौमान यूसुफ कराची से है. और आप लोग जितना मजाया करेंगे उतना हम लोग एंजॉय करेंगे. किसी को अपने बाल चेंज करने, किसी को अपना कमरा चेंज करना है, किसी को अपने कपड़े चेंज करने हैं, किसी को अपनी बॉडी चेंज करनी है, किसी को अपनी कोई आदत बदलनी है, किसी को कोई अपना स्किल चेंज करना है, किसी के बाल नहीं है उसको बाल उगाने, things like that. So anyway, it could be as funny as possible. Okay, so shall we start? Yes. 5 बज गए पूरे. जी, I think we start. ठीक है. All right. Okay, who's starting? अनम फैज फ्रॉम कराची. अच्छा, अनम अपनी शक्ल दिखाएं प्लीज, ताकि मैं पता हो, क्योंकि मेरे पास इतना सारे स्क्रीन है तो पता नहीं चल रहा होता कौन बोल रहा है. So अनम, आप can you turn on the video for a while? अनम का हाथ भी उठा हुआ है, हाथ भी रेस किया हुआ है अनम ने. और नौमान का हाथ उठा हुआ है, नौमान ने हाथ उठाया हुआ है, हुसन आरा ने हाथ उठाया हुआ है. तो जिन लोगों ने हाथ उठाया और पहले प्रेजेंट नहीं किया तो हम उनको चांस देंगे. जी अनम बोलिए. जी अस्सलाम वालेकुम. 1 सेकंड में अपनी वीडियो ऑन कर लूं. जरूर. सो जरा बताइए भाई, आप क्या चेंज करना चाहती हैं अपने बारे में? ये वीडियो मेरी ऑन हो नहीं रही है कुछ. I'll read it. एंजॉय करेंगे. एंजॉय सवाल करें तो मैं जो है वो ये ना हो कि कोई दूसरे जवाब सुन के जो कि जवाब दे के लाने के बजाय उस मौके पे चौका मारूं. बहुत दफा मुझे कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं अपने कॉन्फिडेंस को एस्केलेट करके इस सब को जो है वो खत्म करना चाहूंगी. नाम तो इसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा, है ना? So you have to work on it. Yes. So why do you think you need to do that? What happens? Why? What happens? Because मैं बहुत
कंफ्यूज हो जाती हूँ जब कोई वही बात है कि लिटरली आई गेट बोर्ड आउट व्हेन समवन आस्क्स मी समथिंग ट्रिकी। तो जो मैंने डिफाइन किया है ना कि अगर कोई मुझे ट्रिकी क्वेश्चन की गूगली फेंके तो मैं उस मौके पे चौका लगाना चाहूँ, बिकॉज पीपल हैव यूज्ड दिस lacking of mind to for their own benefits, to manipulate the situations and the circumstances. So this is one thing I would like to change about myself, and deal with people confidently so that nothing of that sort happens with me again, because I don't want to be pushed anymore for the it's one of the cons that I have. So I really don't want to be pushed anymore by anyone negatively, though I try to be flexible. डॉक्टर नाइला की लाइट चली गई है तो इसलिए वो ड्रॉप हो गई है। अनम बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है आपने और घर भी था इसमें। मैंने अब्दुर्रहमान आपको अनम्यूट कर दिया है, लेकिन आप 1 मिनट भी वेट कर लें और हम स्टार्ट कर देते हैं। और भी जो लोग करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम फिर उनको मौका दे देंगे। और जो लोग पहले नहीं जिन्होंने प्रेजेंट किया, अगर वो लोग प्रेजेंट करें तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे, और अगर कोई नहीं करना चाहेगा नया तो फिर जो पुराने लोग होंगे हम उनको भी चांस दे सकते हैं। लेकिन हम पहले प्रेफरेंस देंगे कि जो हमारे नए लोग हैं हम उनको पहले प्रेफरेंस देंगे कि जिन्होंने पिछली दफ़ा नहीं किया, ताकि सबको मौका मिल जाएगा। जिन्होंने अपने नाम के साथ सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ उनको हम नहीं मौका दे सकते, जिन्होंने अपने नाम के साथ सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ। तो जिसने अपने नाम के साथ सीरियल नंबर नहीं लिखा तो वो हैंड रेज ना करे। जैसे मोहम्मद लियाकतुल्लाह साहब, आप अपने नाम के साथ पहले सीरियल नंबर लिख लें तो फिर मुनासिब रहेगा। सीरियल नंबर आगे सिटी भी लिखना चाहे तो वो भी लिख लें। इसी तरह हुसैन आरा के नाम से कोई साहब या साहिबा हैं, इनको मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ अगर इन्होंने थोड़ी देर में अपना सीरियल नंबर ना लिखा तो इनको मैं फिर रिमूव कर दूंगा। मेरा ख्याल है डॉक्टर नाइला हमें चंद मिनट में ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि शायद कराची में लाइट गई है अभी कुछ इलाकों, इस वजह से। इसी दरमियान में कोई अपना एक्सपीरियंस, ये लियाकतुल्लाह साहब अपने नाम के साथ लिखिए ना, आप इधर नहीं चैट में नहीं बताना, आपने अपने नाम के साथ लिखना है। नाम के ऊपर क्लिक करें, उसको रीनेम की ऑप्शन आएगी, वहां से रीनेम कर लें। जी डॉक्टर नाइला, मैंने आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट हो गई। सॉरी, मैं हमारे पास लाइट चली गई थी तो जनरेटर took some time to turn on. जी नो प्रॉब्लम। Okay, so who was right? Who was saying? Who was talking about? I think राबिया बोल रही थी। नहीं, पहले तो इससे पहले तो थी अनम थी, उनका कंप्लीट हो। अब्दुर्रहमान बोलेंगे। अब्दुर्रहमान। अनम का हो गया, अब कौन बोलेगा? अब्दुर्रहमान जी। ओके अब्दुर्रहमान। So अब्दुर्रहमान, what do you want to change about yourself? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो मेरी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग जो मुझे फील होती है वो है मेमोरी, मतलब बहुत शॉर्ट मेमोरी है। और मैं अभी आपसे जैसे बात करूंगा, कोई नई बात होगी, किसी से नाम पूछूंगा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि नेक्स्ट वो मतलब मोमेंट पे ही वो नाम जहन से निकल जाता है। Okay. तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई चांस कुदरत दे तो जो चीज मिलनी चाहिए वो ये कि अच्छी मेमोरी हो, जिसे कहते हैं कि बहुत एक्यूरेट हो, आप सुने और आपको याद हो जाए, या फोटो मेमोरी हो, कोई चीज देखें और वो बिल्कुल हो जाए। जबरदस्त। ये मगर जी सॉरी जी प्लीज। नहीं आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। बस ये चीज है जो मतलब एक हर्डल बन जाती है, हालांकि वो कोशिश करते हैं कि फिर उसको कई जगह चीजों को नोट करना पड़ता है, कोई पेपर पे लिखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, कोई चीज मिस ना हो जाए कोई। तो ये थोड़े से मेमोरी मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मुझे जरूर महसूस होती है। So thank you so much for sharing that। और जी इसमें आपने कहा फन तो कोई ऐसी चीज बात नहीं, लेकिन एक बात है कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मैं जो है ना अपनी फैंसी का नाम भी भूल जाता था, यानी चेंज कर देता था।
उसका उसका नाम था समीना और मैं जो है ना उसको सीमा याद आता था मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस जमाने थोड़ी सी पुरानी बात है तो वो शादी होते होते याद हो गया था, वरना तो आप सोचेंगे क्या मुश्किल हो। तो आई होप कि आप अपनी बीवी का नाम नहीं भूलते हैं। नहीं, आप नहीं बोलता। तो ये तो बहुत ज्यादा फन वाली बात बता दी आपने। एनीवेज तो यस, सबकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, और जिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आई थिंक हम अपनी मेहनत से, जो हमारे पास रिसोर्सेज होती है उसकी से हम इनको एड्रेस करते हैं। तो आप सही कर रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, आप लिख लेते हैं, वो सही करते हैं। आप जब चीजें लिख लेते हैं तो सही रहता है। हम सब एज वी आर एजिंग तो सबके साथ ये इशू है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू मेक अ नोट, कुछ लिख रहे हैं अपने सामने। अब आई डोंट नो कि आप अपने फोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम तो फोन में बहुत सारी चीजें मैं तो लिख लेती हूँ, तो अपना फोन खोला और जल्दी से देख लिया, हर चीज का एक फोल्डर बना लिया है और फिर वहां पे जाके देख लेती हूँ। सो ऑल ऑफ अस आर जो भी आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मुस्तफा, हु गोस नेक्स्ट? नौमान जी, नौमान। I don't know, change my personal trait, because in the sense that I get bored out of it very soon. I don't like doing repetitive stuff. Okay. Like, you know that ant and cricket story where the ant keeps on actually piling up food for the winters, but the cricket is like happy and in the field singing around. So I'm kind of a cricket, and I would like to have some ant trait in